morning students. In the last lecture just we had completed the chapter number 2, electric potential and capacitance, and we are also trying to solve the sum of the numericals. Okay, and we will also help you to find out the solution of the additional problems when the school is reopened. Don't worry at that time. Okay, so today we are going to start with the chapter number 4. And what is the name of the chapter? That is the moving charge and magnetism. One of the very important, interesting chapter from the JEE NEET point of view. In this chapter, you are going to study about how the electric current produces the magnetic field, how the different types of the magnetic field produced by the straight conductor, by the circular coil, by the solenoid, what are their respective formulas, how this magnetic field can help in our day-to-day life, what are the various uses. Okay, one of the very important chapter. So very first thing, you are familiar with the Oersted observation. So what is Oersted observation? When the electric current is not passing through the conductor. Okay, what is the direction of the magnetic compass? Magnetic compass is always in the north south direction. तो ये needle अपने को north south direction show कर रही है. But as soon as the key is closed, okay, this needle is deflected towards its right side. मतलब it deflected towards east. North से east हो गई. So ये क्या show कर रहा है? When the electric current is passing through a conductor, it produces magnetic field. This is the Oersted observation, and this observation is very firstly demonstrated by the Hans Christian Oersted in front of French Academy of Science. Okay, at that time it discovered that electric current passing through a conductor produces magnetic field. But how much magnetic field is produced by the conducting wire? That is, and the formulas are derived by Biot and Savart. So what is Biot-Savart's law? Suppose we are taking any point P. Okay, the intensity, the magnitude of the intensity of magnetic field is represented by B. तो यहाँ पे small magnetic field dB produced by the current element. Okay, here it is produced by the current element. Current element is called IDL. The intensity of the magnetic field dB produced by the current element IDL, whose position is given by vector R. तो यहाँ dB जो भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो कंबाइनिंग दिस थ्री, तो dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट जैसे चैप्टर नंबर 1 में जब k कांस्टेंट था 1/4 pi epsilon 0, here the constant is mu 0 upon 4 pi, and the value of this constant is 10 raised to power minus 7 Tesla meter upon ampere. And what is mu naught known as? Mu 0 is known as permeability of free space. Epsilon 0 था permittivity of free space. Here it is permeability of free space, and its value is 4 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla meter upon ampere. तो ये तो स्केलर फॉर्म dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. If you want to convert it into the vector form, जैसे हमने डाइपोल के टाइम पे देखा था कि cos थीटा होता है तो अपने पास में क्या था बेटा, डॉट प्रोडक्ट, और sin थीटा है तो यहाँ पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट. तो dB वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैरेट अपॉन r स्क्वायर. What is r कैरेट? Vector divided by its magnitude. So it can also be written as vector r divided by r cube, where r caret is equal to vector r divided by its magnitude. So this is a small mathematical representation of Biot-Savart's law. तो यहाँ पे intensity of magnetic field at point P due to the current element. This is current element बेटा, ये current element है. This is current element ideal. तो then it is making an angle theta. Angle किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? With respect to the tangent. ओके, तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड? द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, therefore total magnetic field एट पॉइंट P. तो यहाँ पे डी डेरिवेटिव को हटा के यू हैव टू अप्लाई व्हाट? इंटीग्रेशन.
तो दिस b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर r अपॉन 4 पाई, दिस इज आर क्यूब। तो कौन कौन से टर्म्स कांस्टेंट हो गए बेटा यहाँ पे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन आर क्यूब। ओके, ये वायर है विच इज इन द शेप ऑफ लाइन, तो वी कैन यूज व्हाट बेटा, लाइन इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। ओके, एंड दिस प्लस साइन क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर जाती हुई। एंड यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द राइट हैंड थंब रूल, होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी बेटा, अंदर जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट गो थ्रू इट।